What are the necessary elements of a process? जब organizations अपने system डिजाइन करते हैं, अपने processes बनाते हैं, flow charting was the yesteryear's principles of how processes have to be put in place. आपने एक flow chart set of activities identify कर ली, step by step. पहली activity में ये करना है, उसके बाद next activity ये करना है, उसके ये decision threads हैं, etc. But जैसे जैसे प्रोसेसेस का इंप्लीमेंटेशन बढ़ा एंड पीपल स्टार्टेड टू एनकाउंटर चैलेंजेस, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स केम अबाउट. एक बहुत आसान सा थ्रेड कम्स फ्रॉम द ISO 9001 क्लॉज नंबर 4.4.1. मेंशन करते हैं दैट व्हेन यू आर पुटिंग टुगेदर प्रोसेसेस, लुक एट आइडेंटिफाइंग हर एक्टिविटी जो आपने आइडेंटिफाई किया. सो लेट्स से आई एम लुकिंग एट बिल्डिंग अ प्रोसेस अराउंड doing sales. So step number 1, a lead has been received. Ideally, I'll talk to you about my organization. हमारे पास Google से, LinkedIn से, Facebook से leads receive होती हैं. Those leads are emailed to us automatically through the Google lead form and all of that. That lead reaches our sales team. So हमारे पास designated days हैं. इस particular day को नवीन lead handle करेंगे, इस particular day को ज्योतिर्मय lead handle करेंगे, इस particular type of lead को नेहा handle करेंगे, etc. So lead is received. Lead is then subsequently actioned, added to my CRM. तो एक तो आपने step by step अपनी activities identify कर ली. But ISO 9001 goes a step further to say that हर एक्टिविटी के लिए इनपुट आइडेंटिफाई कीजिए, उन इनपुट्स के सप्लायर्स आइडेंटिफाई कीजिए. तो आई एम सेइंग एक्टिविटी थी लीड बीइंग रिसीव्ड. लीड रिसीव होने का इनपुट क्या है? दैट ईमेल दैट वाज ट्रिगर्ड बाय द गूगल फॉर्म. हु इज द सप्लायर ऑफ दैट? माय वेबसाइट इज द सप्लायर of that information. उसका आउटपुट क्या है? that the lead has been received in your inbox. और उसका beneficiary, so you are looking at a system where not just your activities but उसके input, output, input का supplier, उस output का बेनिफिशियरी या कस्टमर आइडेंटिफाई करें. अगर इफ यू अंडरस्टैंड सिक्स सिग्मा, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ साइपॉक. तो एक वो बोल रहा है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई इनपुट, आउटपुट, सप्लायर एंड कस्टमर. 2, फॉर ऑल योर प्रोसेस स्टेप्स, एक्टिविटीज आई मीन, यू मस्ट आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो पुट टुगेदर सम स्ट्रक्चर अराउंड who is responsible for which activity, और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए अपने आप को. You may want to say who is responsible, who shall approve, who is accountable, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कौन करेगा, इंफॉर्मेशन का ऑडियंस कौन रहेगा. तो RASIC और RACI, रेसी, रैसिक, कोई भी एक मॉडल इस्तेमाल कर लीजिए. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सेट कर दीजिए. तीसरा, ISO डिमांड करता है आपसे क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ दीज प्रोसेसेस डिसाइड कीजिए. अगर एक प्रोसेस है, व्हेन आर यू गोइंग टू कॉल इट सक्सेसफुल? व्हाट इज योर मेजर ऑफ सक्सेस? फॉर एग्जांपल, मेरे लीड जनरेशन प्रोसेस का सक्सेस मैं कहता हूं 1 is quantity of lead received. So if my lead number, lead count is 160 and above in a month, I am calling it pass. दूसरा, I'm saying lead quantity. तो हमारे यहाँ अपने indices हैं to say that whether the lead quality has been good or bad. So if a percentage of lead is good, we call it 90%. So 90% वाले मोड में अगर हमारे 60% से ज्यादा लीड आए हैं, तो we are calling that as a good month. So criteria of evaluation of your processes must be in place, and how is that to be evaluated has to be put in place. एक और thought है जो ISO 9001 की तरफ से आता है, which is about risks and opportunities. You got to realize that जब हम process steps identify करते हैं, ideally it is talking about the positive flow. जिंदगी हमेशा positively नहीं चलेगी. जो आपने decide करा था, हो सकता है वैसे outcomes ना आए. So things may not work the way you want them to. So you must think in terms of what may go wrong and put controls around them. For example, लीड फॉर्म से लीड हमारे पास तभी रिसीव होती है जब वेबसाइट ठीक से काम कर रहा होता है और वेबसाइट में ईमेल इंजन ठीक से काम कर रहा होता है. You got to realize that some anomaly that has happened to your website and hacking attempt that has happened on your website will end up killing this emailer, which may mean that lead will not happen. So हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, एवरी ट्यूसडे हम लीड फॉर्म्स पर खुद से टेस्ट लीड डालते हैं, चेक करते हैं कि वो लीड रिसीव हुआ कि नहीं. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इसेंशियली डूइंग डिटेक्शन कि योर प्रोसेसेस आर वर्किंग और नॉट वर्किंग. सो यू मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ what may go wrong and put in corrective measures. Control plan establish कर रहे हो. Ideally you will end up using a tool like FMEA or do it without it. Organization के हर process पे KPIs identify करना would be a necessary element. Identify opportunities of improvement. Identify the skills that are needed to be able to perform that job. Could be your basic framework of
how a process design should be implemented. Read through ISO clause number 4.4.1 for greater detail.